1. Escalation, noun. बढ़ावा, तेजी, शिद्दत बढ़ाना. A rapid increase, a rise. 2. Patronage, noun. तायीद, हिमायत. The support given by a patron. 3. Ominous, adjective. मनहूस, बदनाम. Giving the worrying impression that something bad is going to happen, threateningly inauspicious. 4. Combustible, adjective. आतिशगीर, इश्तियाल पजीर. Able to catch fire and burn easily. 5. Intense, adjective. बुलंद, शदीद, तेज. Of extreme force, degree, or strength. 6. Deter, verb. हौसला शिकनी करना, किसी काम से रोकना. Discourage someone from doing something by instilling doubt or fear of the consequences. 7. Hitherto, adverb. अभी तक, यहाँ तक, इस जगह तक. Until now or until the point in time under discussion. 8. Demarcation, noun. हुदूद का तायुन, हदबंदी, इंतहा. The action of fixing the boundary or limits of something. 9. Provocation, noun. इश्तियाल फैलाने वाली हरकत, तैश. Action or speech that makes someone angry, especially deliberately. 10. Contentious, adjective. मुतनाज़ा, झगड़ालू. Causing or likely to cause an argument, controversial. 11. स्ताइक. तेज नोकदार चीज जब होना. To penetrate or hold something with a pointed object. 12. Symptomatic, adjective. अलामती, इशारे का. Serving as a symptom or sign, especially of something undesirable. 13. Stance, noun. मौक़िफ़. हालत. कैफियत. नुक्ता नज़र. The way in which someone stands, especially when deliberately adopted, as in cricket, golf, and other sports, a person's posture. 14. Envoy, noun. कासिद, सफ़ीर, एलची. A messenger or representative, especially one on a diplomatic mission. 15. Surge, verb. तेजी से ऊपर चढ़ना, जोर से हिलना या हिलाना. Of a crowd or a natural force, move suddenly and powerfully forward or upward. Trouble on the Western Frontier. Zahid Hussain. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published on December 14, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. If there were any illusions about Pakistan having secured peace on its western frontier after the Afghan Taliban's return to power last August, they should have been dispelled by now. The escalation in border clashes and the Afghan Taliban's patronage of the Pakistani outlawed militant network have heightened national security concerns in this country. The mounting tension between the two countries is ominous. It is not only Pakistani security forces but also the civilian population that is being targeted in cross-border attacks. The latest incident of gunfire and heavy artillery shelling by Afghan security forces at the Chiman border has left several civilians dead or wounded. Some casualties have also been reported on the Afghan side in retaliatory action by Pakistan's security forces. The border was opened after an apology from the Afghan side, but the situation remains highly combustible. Over the last few months, there has been a marked increase in the exchange of fire between the two forces, resulting in the frequent closure of the Chiman border, affecting trade and travel. Last month, the border was closed for several days after an Afghan security guard shot and killed a Pakistani security official and wounded 2 others. That set off an intense exchange of fire between the two sides, reportedly leaving several Afghan soldiers dead. Such exchanges have created a very volatile situation. A major cause of tension has been the Taliban objection to Pakistan's fencing of the border. Last week's exchange of fire started when Afghans tried to cut a part of the border fencing.
It is not only Pakistani security forces but also civilians that are being targeted in cross-border attacks. While Chemin, which is the busiest transit trade route to Afghanistan, has been the major flashpoint, clashes have also been reported from other crossings in the former tribal districts. These point to the increasingly confrontational ties between Pakistan and the Taliban regime next door. In fact, in challenging Pakistan's right to fence the Durand Line area, the Taliban have gone so far as to remove barriers at several points of the frontier. In order to deter illegal traffic and formalize the border, Pakistan has been putting up barricades along the 2,400-kilometer-long frontier, which had hitherto allowed easy movement for tribes straddling both sides. Like other Afghan governments in the past, the Taliban administration, too, does not recognize the Durand Line as a permanent border. It seeks to have open frontiers for the Pakhtun tribesmen inhabiting the region. It may be a valid demand that the tribesmen living on both sides of the border should be allowed free movement, but the refusal to recognize the border doesn't have any justification. In many cases, Pakistani Taliban being sheltered by the Kabul administration have been involved in dismantling the demarcation. Pakistan has handled this provocation prudently so far, to avoid making it a contentious issue. But the spike in border clashes is alarming. In fact, the border fire escalation is symptomatic of a more serious problem. The Afghan Taliban's increasingly aggressive stance cannot be seen in isolation. It is not just the border standoff but also the militant sanctuaries in Afghanistan that have caused strains in relations between Islamabad and the Taliban regime. The situation has become highly volatile after the banned Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, called off its ceasefire with Pakistan and stepped up cross-border attacks on Pakistani security forces in the tribal districts. Curiously, the latest escalation on the Chemin border has happened days after the attempt on the life of Pakistan's envoy in Kabul. The incident carried the mark of the TTP, which is closely aligned with the militant Islamic State group's Khorasan chapter, ISK, that claimed responsibility for the attack. The Afghan Taliban's overt patronage of the outlawed Pakistani militant network cannot be delinked with the mounting border tension. The continuing ideological connection of the Taliban regime with some transnational militant groups not only threatens regional security but also endangers Afghanistan's own stability. The increasing terrorist violence in the country is the result of the Taliban's reluctance to act against some foreign militant groups. Just days after the attack on the diplomatic mission, militants raided a hotel in Kabul used by Chinese businesspeople and other foreign visitors. This attack, too, has been claimed by the ISK, which is claiming most attacks. The increase in terrorist attacks in recent months belies the Taliban claim that it has improved security since returning to power last August. While China has yet to formally recognize the Taliban government, it is one of the few countries to have a full diplomatic presence there. There are problems though. The presence of the East Turkestan Islamic Movement, ETIM, a Chinese Muslim separatist group closely aligned with the ISK, in Afghanistan is a contentious issue between Beijing and Kabul. The Taliban have refused to expel the militant group. Notwithstanding the Taliban assurance that Afghanistan is safe for diplomats and businessmen, there has been a marked rise in terrorist attacks targeting foreign diplomats and visitors. 2 staff members of the Russian embassy died in a suicide attack that took place outside the mission in September. That attack too was claimed by the ISK. Such attacks have justifiably reinforced the fears of the international community of Afghanistan becoming a safe haven for transnational militant groups and have further increased the isolation of the conservative regime that has not yet been formally recognized by any country. The regime's refusal to cut off its ideological links with groups such as the TTP, ETIM, and the Islamic Movement of Uzbekistan has provided a favorable environment to global terrorist groups to operate in. The unholy alliance of Afghan-based militant groups presents a security threat to the entire region. The recent surge in terrorist attacks inside Pakistan is rooted in the Afghan Taliban's patronage of global terrorist networks.
Pakistan needs to review its policy on dealing with the Afghan Taliban regime in order to make its western border secure. It is important to engage with the Taliban administration, but Islamabad must also take a firm position on the terrorist attacks stemming from Afghanistan. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, December 14, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. अगर गुज़श्ता साल अगस्त में अफ़गान तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद पाकिस्तान की जानिब से अपनी मग़रिबी सरहद पर अमन कायम करने के बारे में कोई गलत फहमी थी तो इसे अब तक दूर कर देना चाहिए था। सरहदी झड़पों में इजाफे और अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी कालादम अस्करियत पसंद नेटवर्क की सरपरस्ती ने इस मुल्क में कौमी सलामती के खदशात को बढ़ा दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी मनहूस है। सरहद पार से होने वाले हमलों में सिर्फ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ही नहीं बल्कि शहरी आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है। चमन सरहद पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग और भारी तोपखाने की गोलाबारी के ताज़ा तरीन वाक़ये में मुतअद्दिद शहरी हलाक ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की जानिब से भी कुछ हलाकतों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अफगानिस्तान की जानिब से मुआफ़ी मांगने के बाद सरहद खोल दी गई थी, लेकिन सूरत हाल अब भी इंतहाई आतिशगीर है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान दोनों अफवाज के दरमियान फायरिंग के तबादले में नुमायां इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में चमन बॉर्डर बार बार बंद होता है, जिससे तिजारत और सफ़र मुतासिर होता है। गुज़िश्ता में अफगान सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत और 2 दीगर के जख्मी होने के बाद सरहद को कई दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके नतीजे में दोनों फरीकों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें मुबैना तौर पर मुतअद्दिद अफगान फौजी हलाक हो गए। इस तरह के तबादले ने एक बहुत ही गैर मुस्तहकम सूरत हाल पैदा कर दी है। कशीदगी की एक बड़ी वजह पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर बाड़ लगाने पर तालिबान का एतराज़ है। गुज़िश्ता हफ्ते फायरिंग का तबादला इस वक्त शुरू हुआ जब अफगानों ने सरहद पर बाड़ लगाने के एक हिस्से को काटने की कोशिश की। सरहद पार से होने वाले हमलों में सिर्फ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ही नहीं बल्कि आम शहरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। चमन, जो अफगानिस्तान के लिए सबसे मसरूफ ट्रांजिट ट्रेड रूट है, फ्लैश पॉइंट रहा है। साबिका कबायली इज़ला में दीगर गुज़रगाहों से भी झड़पों की इत्तलात मौसूल हुई है। ये पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान बढ़ते हुए महाज आराई के ताल्लुकात की तरफ इशारा करते हैं। दरअसल ड्यूरेंड लाइन के इलाके में बाड़ लगाने के पाकिस्तान के हक को चैलेंज करने में तालिबान ने सरहद के कई मकामात पर रुकावटों को हटाने के लिए यहां तक चले गए हैं। गैर कानूनी नक्ल व हमल को रोकने और सरहद को बाज़ाब्ता बनाने के लिए पाकिस्तान 200-400 किलोमीटर तवील सरहद पर रुकावटें खड़ी कर रहा है, जो अब तक दोनों अतराफ में फैले हुए कबाइल के लिए आसान नक्ल व हरकत की इजाज़त देता था। माजी की दीगर अफगान हुकूमतों की तरह तालिबान इंतज़ामिया भी ड्यूरेंड लाइन को मुस्तकिल सरहद के तौर पर तस्लीम नहीं करती। इसमें इस खत्ते में बसने वाले पख्तून कबाइलियों के लिए खुली सरहदें रखने की कोशिश की गई है। ये एक जायज़ मुतालबा हो सकता है कि सरहद के दोनों अतराफ रहने वाले कबाइलियों को आज़ादाना नक्ल व हरकत की इजाज़त दी जाए, लेकिन सरहद को तस्लीम करने से इनकार का कोई जवाज़ नहीं। बहुत से मामलात में काबुल इंतज़ामिया की तरफ से पनाह लेने वाले पाकिस्तानी तालिबान हदबंदी को ख़त्म करने में मुलव्वस रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक इस इश्तियाल अंगेज़ी को समझदारी से संभाला है ताकि उसे मुतनाज़ा मसला बनाने से बचा जा सके, लेकिन सरहदी झड़पों में इजाफा तशवीशनाक है। दरहकीकत सरहद पर आग में इजाफा एक ज़्यादा संगीन मसले की अलामत है। अफ़गान तालिबान के बढ़ते हुए जारहाना मौक़िफ़ को तन्हाई में नहीं देखा जा सकता। ये सिर्फ सरहदी तातुल ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में अस्करियत पसंदों की पनागाहें भी हैं, जिनकी वजह से इस्लामाबाद और तालिबान हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) की जानिब से पाकिस्तान के साथ जंग बंदी ख़त्म करने और कबायली इज़ला में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर सरहद पार हमलों में इजाफे के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है।
दिलचस्प बात यह है कि चमन सरहद पर ताज़ा तरीन कशीदगी काबुल में पाकिस्तानी सफीर की जान लेने की कोशिश के चंद रोज बाद हुई है। इस वाक़ये पर टीटीपी का निशान था, जो शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खरासान चैप्टर अलिफास्की के साथ करीबी तौर पर मुंसलिक है, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अफगान तालिबान की जानिब से कालादम पाकिस्तानी अस्करियत पसंद नेटवर्क की खुली सरपरस्ती को बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी से अलग नहीं किया जा सकता। बाज़ बैन अल-अक़वामी अस्करियत पसंद ग्रोहों के साथ तालिबान हुकूमत के मुसलसल नज़रियाती ताल्लुकात न सिर्फ इलाकाई सलामती के लिए खतरा हैं, बल्कि अफगानिस्तान के अपने इस्तेहकाम को भी खतरे में डाल रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए तशद्दुद का नतीजा तालिबान की जानिब से कुछ गैर मुल्की अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाहट का नतीजा है। सिफारती मिशन पर हमले के चंद रोज बाद ही अस्करियत पसंदों ने काबुल के एक होटल पर छापा मारा, जिसमें चीनी ताजिर और दीगर गैर मुल्की सयाह इस्तेमाल करते थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी अलिफास्की ने कबूल की है, जो सबसे ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर रही है। हालिया महीनों में दहशतगर्दी के हमलों में इजाफा तालिबान के इस दावे की नफी करता है कि उन्होंने गुज़िश्ता अगस्त में इक़्तिदार में वापसी के बाद से सिक्योरिटी को बेहतर बनाया है। अगरचे चीन ने अभी तक तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है, लेकिन ये उन चंद ममालिक में से एक है जिसकी वहाँ मुकम्मल सफारती मौजूदगी है। ताहम कुछ मसाइल मौजूद हैं। मशरिकी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक (ETIM) की मौजूदगी, जो एक चीनी मुस्लिम अलहदगी पसंद ग्रुप है जो अलिफास्की के साथ करीबी तौर पर मुंसलिक है, बीजिंग और काबुल के दरमियान एक मुतनाज़ा मसला है। तालिबान ने अस्करियत पसंद ग्रुप को मुकबदर करने से इनकार कर दिया है। तालिबान की इस यकीन दहानी के बावजूद कि अफगानिस्तान सफारतकारों और ताजिरों के लिए महफूज है, गैर मुल्की सफारतकारों और ज़ायरीन को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द हमलों में नुमायां इजाफा हुआ है। रूसी सफारत खाने के अमले के 2 अरकान सितंबर में मिशन के बाहर होने वाले एक खुदकुश हमले में हलाक हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी ISK ने कबूल की थी। इस तरह के हमलों ने बैन अल-अक़वामी बरादरी के इन खदशात को माकूल तौर पर तक़वियत बख्शी है कि अफगानिस्तान बैन अल-अक़वामी अस्करियत पसंद गिरोहों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन जाएगा, और क़दामत पसंद हुकूमत की तन्हाई में मज़ीद इजाफा हुआ है, जिसे अभी तक किसी भी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। हुकूमत की जानिब से TTP, ETIM और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान जैसे गिरोहों के साथ अपने नज़रियाती रवाबित मुनक़ते करने से इनकार ने आलमी दहशतगर्द गिरोहों को काम करने के लिए साज़गार माहौल फराहम किया है। अफगानिस्तान में कायम अस्करियत पसंद गिरोहों का नापाक इत्तेहाद पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों में हालिया इजाफे की जुड़ें अफगान तालिबान की जानिब से आलमी दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती में हैं। पाकिस्तान को अपनी मगरबी सरहद को महफूज बनाने के लिए अफगान तालिबान हुकूमत से निमटने के हवाले से अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तालिबान इंतज़ामिया के साथ बातचीत करना ज़रूरी है, लेकिन इस्लामाबाद को अफगानिस्तान से शुरू होने वाले दहशतगर्द हमलों पर भी मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। मज़मून निगार एक मुसन्निफ़ और सहाफ़ी हैं। डान अखबार में शाये शुदा 14 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.